Hi, I am Nirmal Sarkar, and you are listening to the CryptoHub India Podcast. We are a group of crypto enthusiasts, and this podcast is nothing but a collection of our Clubhouse live sessions, where we discuss the latest crypto trends from India. Well, this also means you can directly participate on our Clubhouse sessions and become a part of our next episode. Come, join us. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. Thank you. I have one banning of work in USA and EU. I think there is a parliamentary vote going to happen, already done. And that same going to be. So if they ban it, that means the first thing that will. I think, hi, this is Manish. Hello, sir. Uh, how are you guys after a long time? I actually read that update. Europe has already banned proof of work. I don't know what I should do with all my proof of work coins in my portfolio, especially Cadena. And what's the reason behind that? I'm listening to most of the, I think 2 3 interviews where they or like governments would back going to work, but there is no clear any reason I haven't found why they're actually banning it just because of the energy or Where did she go? So I'm reading the latest update, Karma. So it says European Parliament has voted against EU's cryptocurrency asset regulation, including a controversial proposal to outlaw all proof of work cryptocurrency. So I think they rejected it now. Because if proof of work is banned, then Ethereum okay. is also gone, right? Ethereum is Yeah, also that proof means of they are work right not now. going to. That's what I asked. That I heard the news that there is a parliamentary side over there which is on cryptocurrency. The topic is also either to adopt or ban proof of work. So there was a voting session to vote in the favor or maybe against the rule. It may be against that law which formed banning that proof of work. So might be they voted against that law which says that we're gonna ban proof of work. Yeah, So that means they are not going to ban it. So it can be, but that heated up, you can say large scale. People were talking about if you're gonna ban it, like majority of the whole crypto fund is in proof of work. Just because you have a BTC which is on proof of work, almost 40% of the you can say market cap is on B. So that means Europe or same. But if they voted against it, that means still yeah. why they If thought about it just because there is a energy yes, these are just person. kind of gimmicks. So if you just Google, right, just Google first article, which is 6 minutes ago. It is saying EU rejects POW ban following backlash. Yeah. So today Elon Musk has tweeted, as a general principle for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products than dollars when inflation is high, because inflation right now is like 8% in you. And he's saying, I still own and won't sell my Bitcoin, Ethereum, or Dodge. So since yesterday there is lot of noise going on Twitter that huge movement in Bitcoin is about to come. I don't know if it is a downside movement or if it is an upside movement, but all of a sudden all these traders and these accounts have got activated, which were like sitting idle for a few weeks or months, I should say, right? The problem is not only Russia, Ukraine. Recent news from China is coming that they have shut down their Shanging, which is the biggest production facility in China, and that is kind of worrying over here in North America or European countries that lot of production supply chain is going to get hampered, and now it will add to the inflation due to yeah. So they have shut down that city due to COVID. There is a huge number of COVID cases have arisen, and not only China, even in Hong Kong. And sometime I feel, I don't know, whenever the world is trying to open, China starts shutting itself and all these news start coming from China. What's going on? So, but again, like I said, yes, Samir, not only those Bitcoin wallet, but these Twitter accounts also, which used to provide a lot of technical analysis and news around crypto, they were very silent for last few months. All of a sudden, I'm seeing last 2 days they have become activated, and I'm starting getting their tweets because I follow them. They're putting charts of BTC, bringing all data, old data, and trying to push that some. Hmm. Yeah, Russia should start accepting too because just because of them, it suffered a lot. No, no. If you remember, we already discussed the thing like
there was a conference where will he gonna be used as a pay for their oil. At that time he said that maybe in the future we're gonna be using it, but right now the only risk factor is about that fluctuation. The rate is very fluctuating, and just because of that we cannot use it. Otherwise, it is not a big task to use. So now he is in a situation where he has to use. He is not getting any other option because he's being banned financially from even Swift is banned for Russia. So now what he have the option crypto. Even if you remember, like Venezuela also offered multiple companies even to India to trade for oils and for gas, and that they were giving 30% discount, but the only condition was to pay the payment in crypto, and they had a something petro something named cryptocurrency using which India has to pay them if they want their gas from Venezuela, and they will gonna give it 30%. Even the blockchain head of Venezuela also visited India and have tie up with the 2-3 Indian exchanges where their native token should be traded over there, where even you can say corporate, you can say public companies or private companies go and buy that particular coin if they want to trade with. So it's being there because they have suffered a lot in their financial sector. So that's why they shifted to blockchain. Even they started using, but then created their own token. I don't know whether it is a like a CBDC or something like that, but they had it and they offered in India in Turan. So Russia maybe gonna do the same thing. And as per the stats, Russia already own like more than 25% of the whole group. So they've been already been always ahead in maybe possible they're gonna using it, but nobody knows when. Yes, will be under 88 gambling hub. So basically they are just betting a million, but at the back they are already prepared to make billion. So yeah, it's just kind of they are showing off that we are betting. Just like if you're supporting a particular team and you want them to win, so you can bet against them. So even if that team is going to lose, you're going to make money. But if that your team is going to win the match, then you will be happy. So it is particularly like that. So if you are betting a lot on Luna and then you bet just a million against it, so even if you're losing that, you are still winning it, and if you are winning it, you're directly winning it. So just making people fool. I don't think no like people gonna just gonna bet blindly without doing it. Like it's a crypto. Nobody's know like even shitcoin's gonna pump a lot, and if Luna talking about Luna, and if there will be any small bull market as well, then can go above $100, $200 as well, because all you just require market. If money flows to any particular coin, it lost I think twice. I've seen it twice, maybe. But yeah, it lost. Never talk about. So So, what do you guys think about the market? I think, in my personal opinion, I was expecting like these instances, like rise of inflation, rise of interest rate, and Ukraine-Russia war. This should have taken like crypto market to more downside. But I see some resistance, like around 200 EMA for like some good coins. It's kind of like you're seeing like Bitcoin is also just 38, 39K, not going below that. So I kind of think like the big investors or whales we say they are still not selling it, or they are not scared or something like that. What feeling you are getting? Do you see some pump coming, or we should wait till 2024 now? the only thing I can say for me right now, I think BTS is not, because it has tasted a lot since last 6 months. So maybe if you see a beginning of it's been trading at the same place. It gone up, it gone back, came back again. Now it's being at the same situation from 35 to 45. It's being traded. I think more. This is the you can say bottom. So it can go up, maybe not gonna, but still. Last time when we had a clubhouse, at that time also said that for me, if it is not going below this area, then I am happy with it. But I will be more happy if it goes above 45, because right now only thing required is to break that 45 area. If it is breaks, and if it, at least gonna stay more than at least 2-3 days above 45, then we can
crossing. But still, if it is not going below 35 area, I'm still happy. I'm not gonna. I can wait for 2024. There is no wrong to wait because that's the pattern. And if it is gonna follow the same pattern, I will be more happy because now I know in 2024 I'm going to make a lot money. I think I think this I was hearing to their podcast, right? Chamath and all these guys who are billionaires. The four all one or something is their podcast. They are four billionaires who discuss about all these investments and stuff and global policies or maybe events that affect investment. So as per them, there is lot of money which was withdrawn last year in November or December. All the big investors withdrew their money from their investments, and actually, if you see from that time onwards, we are seeing kind of a downtrend. Now, what he's saying is all this money is sitting idle, and looking into the inflation rate, they will like any investor would like to invest in a like kind of a security or maybe make such kind of investment which beats the inflation, right? So they are saying either all the money which is sitting idle with these guys, it's going into gold or maybe real estate, or maybe they'll pump the stock market again. So, because like if you will see our daily stock activities in India also, right? A lot of FIIs are selling. Nobody is buying right now. Most of the selling was done previous year, and even today, if you see the data daily, FIIs keep on selling, and then DIIs come in and maybe buy some. So ultimately, this money which they are collecting or they have collected in past, it is sitting idle with them, and it has to come back to the market. So I don't know if inflation is going to make it worse or it's going to make it better. But for sure, there's a lot of money which needs to be invested. What do you think, Sambit? And what does that S2F say? Nobody's वो talking अभी भी about it now. वो अभी भी भाई like क्या he's putting same chart again. So वो भी यही कह रहा है कि this bottom Bitcoin won't go below this. लग तो But वही रहा again, बट huh, स्टिल nowadays what they are doing is now they are adding this caveat there that no Bitcoin or any stock has never seen such situations where first it has to go through COVID and then it has to go through war. So this is unique situation. So that caveat is there. भाई वो बंदा या फियाट टू क्रिप्टो फिर भी सही है लाइक अगर जो ऐसा फेज नहीं आएंगे लाइक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट नहीं मैं लोगों की बात कर रहा हूँ लोग जैसे ग्रुप में दो बंदे जो लोग इतने एक्यूरेटली अपना प्रेडिक्शंस डालते थे कि यार जनवरी में 80 चला जाएगा फैब में वो उनका रीजन यही था बेसिकली ऐसे बंदे को देखते एक चार्ट दिखा था ट्विटर पे स्टार्टिंग के 2-3 लोगों ने एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग आप चार्ट बनाओ बने मार्क कर दो यहाँ जा रहा है इतना इजी होता था सब लोग हाँ और एक तो इसमें 24 आवर चलता है मतलब ये भी नहीं है कि आज ओपन होगा नहीं रात को ये हुआ था मतलब सुबह मार्केट ओपन होगा तो हो जाएगा भाई जो जैसे होता है इंस्टेंट रिफ्लेक्शन आ जाता है Karan came to stage. Karan, do you want to add something? Nothing. I was just listening to you guys. I feel that yeah, like you guys make a lot of sense that there are a lot of YouTubers they show charts, but इतने सारे external factors होते हैं जिससे ये सब चीजें हमारी डिपेंड करती हैं. तो वो सब कोई अकाउंट में ही लेता. वर्ल्ड अफेयर से भी जैसे स्टॉक पे फर्क पड़ता है वैसे ही क्रिप्टो पे भी फर्क पड़ रहा है. बट एज अ लॉन्ग टर्म आई फील दैट मतलब I think that there are going to be some projects, maybe 10% out of all the cryptos which we know about और जो इनके हम नाम सुनते रहते हैं, शायद 10% ही इनमें से legit और actually में फ्यूचर में कुछ हमारे को बना के देंगे. बाकी तो सब speculation ही लगता है. यह स्पेकुलेशन नहीं है एंड इवन Exactly. अगर अभी तो बियर मार्केट है तो अभी आपको रियल वर्थ पता चलेगी लाइक इवन बीटीसी राइट नाउ 50% पे बट एट कंपेयर टू जो वो कॉइन जो अभी 2-3 महीने पहले जो आसमान में जाने वाला था उनका तो कुछ बेस ही नहीं बचा होगा मे बी उनके आगे 6-7 जीरो लग गए तो हाँ जैसे आपका ये एक्सी इन्फिनिटी का जो कॉइन था वो भी इतना ज्यादा बढ़ गया. इवेंचुअली इट इज अ गेम. एक गेम का कॉइन है एक्सी इन्फिनिटी. बट मतलब उस टाइम पे जब ये मेटावर्स की न्यूज आई थी तब एक्सी इन्फिनिटी पता नहीं 10,000 से ऊपर पहुंच गया. एंड अब वो इतना बुरा गिरा है. तो उस टाइम पे मतलब जिन लोगों ने उसके ऊपर करा हो मतलब आई थिंक यू शुड नो कि जैसे लूना की आपने बात करी तो लूना मैंने काफी टाइम पहले लिया था. एंड लूना के में एक्चुअली मतलब इट्स ट्राइंग टू बी द न्यू स्टेबल कॉइन. तो वो मतलब अभी टीथर को चैलेंज कर रहा है जो टेरा है. तो उसमें तो चलो कुछ स्कोप है मतलब बाकी तो सब स्पेकुलेशन ही है बट एटलीस्ट देयर इज सम यूटिलिटी. बट जैसे इतने सारे लोग
बेबी डो और पता नहीं नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग दैट लाइक देयर आर सो मेनी कॉइन्स लाइक जैसे बेबी डोज एंड पता नहीं क्या क्या आता रहता है जिसमें आपको समझ रहे हो 1000x 10 मतलब 100x का ये सब बोला जाता है। तो आई थिंक लाइक इट्स फुल, आई थिंक द मार्केट इज फुल ऑफ मोस्टली लाइक पॉन्जी स्कीम्स जिसके अंदर शायद थोड़े से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड एक एग्जैक्टली, इसलिए मेरे को लाइक कन्विक्शन ही नहीं बनता कभी गेमिंग कॉइन्स का, क्योंकि आई एम नॉट माई सेल्फ इन टू गेम्स। मुझे बड़ा मुश्किल होता है कोई गेम कॉइन लेके होल्ड करना। सैंड और माना तो अभी भी होल्ड करता हूँ मैं। किसी ने सैंडबॉक्स का पूछा है, सिमिलर है वो भी, सैंडबॉक्स इज इट इज एक्चुअली, सिमिलर। हाँ डिसेंट्रलैंड एंड सैंडबॉक्स एक्चुअली मतलब अनाउंसमेंट्स तो आती रहती हैं कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स, बट पता नहीं, देखते हैं। साहिब इज ट्राइंग टू से समथिंग। यस साहिब। No, no, no. I'm just listening to you all, and अच्छा अच्छा। I don't have anything to add. But yeah, if I could take something, छोटा सा is there any app or something which gives notification if the condition met regarding the prices and all? If you could share, and so thanks. Are you talking about an alert app? Sorry. Are you talking about an alert app like that alerts Yeah, you yeah, yeah. regarding the Alert app, price? alert app. Oh, Exactly. Yeah. I So think is there any TeamViewer app? you can do TeamViewer itself. TeamViewer? Yeah. Okay. I think every app which has like where you can trade coins, it gives you alert whenever there's a price movement. Okay. Even WazirX gives it. Yeah. Okay. That needs to be configured, I guess, right? Because Yeah, you have to I first don't know. configure. But if you don't Yeah. gonna configure it, like there have been lots of coin, so you will keep gonna get notification every second, maybe every mic. So either yeah, it can be possible. I don't know is there an app or not, but yeah, it can be possible. There will be any app. Select this. If they fluctuate, if there is any price action, then you. I don't know. It can be possible any exchange gives you notification if you list some number of coins in their favorite list like Binance does. But even on Binance, my notification is off. Even not receiving notification from any exchange whether they. exactly. But Yeah. yes. But if you using this coin market cap and if you get select any particular coin and make it favorite, then you will get a notification because on every 2 or 3% price action I get notification on my selected coins. So yeah, from Okay. that you can get it, Okay. That's nice. A lot. and that will be maybe similar to that another app. For WazirX and Binance. Yeah. So there was a news regarding TH whales. They are buying SIB instead of FTT. So FTT was their favorite coin. Now SIBA flipped FTT on their portfolio because they are buying SIBAs in a huge amount. So maybe if as per Josman, as I said, that everyone is active right now, started projecting their you can prediction, started their whatever the prediction they are. So maybe if anything going positive, crypto in upcoming days, the first you can say finest you can say impression will be on first of all on this meme coins because they have been suffered a lot. So whenever a new market generates like a new cycle, first of all the BTC will gonna up and then it will be meme coin. So if they are buying it, maybe signal, but you cannot guarantee. Yes, they kind of, bring in more people by these pumping these coins 1000x. Then people come to know, okay, Bitcoin, sorry, crypto bull market has come again. Buy SHIB, and then all Apple apps and all Twitter, everybody SHIB gone up, Dogecoin gone up, and they will create a very big hype, and then common man will start coming in. They will buy all these SHIB Bitcoin or SHIB or Dogecoin, whatever coins, and these whales will then sell at top and move their money to these other altcoins, make some profit there, then again withdraw everything and sit back. The cycle continues. Yeah, yeah, yeah. I'm seeing rune pumping in my portfolio. I was planning to add more, but I didn't add. So, well, one more news which was here today morning. In Singapore now, they have started taxing NFTs profits as well. So, like the law has come, and from 2023, March 2023 onwards, you have to file taxes on your NFTs revenue or profit. Right. So नीरज इज सेइंग वर्ल्ड ऐप में बाय द आई थिंक अभी तो बहुत सारे कुकॉन पे तो रोबोटिक से सेट कर दो बाय ऑर्डर। सो है लाइक वर्ल्ड ऐप यू है बाय द बाइनेंस में फ्यूचर स्टेट की परपेचुअल में कोई लिमिट नहीं होती, फीस कटती रहती है, कम हो जाती है उसके वजह से ट्रेड बंद हो सकता है या तो हाँ क्या होता परपेचुअल के अलावा क्या होता है, क्वाड्रेटल होता है कि उसमें होता है
कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसे कुछ होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस उसमें लिमिट होती है, उसमें डेट लिखा होता है उसके आगे, जो भी होगा वो सब BTC उस पे आगे उसका डेट लिखा होता है, कौन सी डेट को कौन सी मंथ को ये क्लोज होने। परपेचुअल में कोई अनटिल अनलेस यू हैव अ मनी लिक्विडेट नहीं। One more thing here about exchange, बात ही कर रहे हैं तो Gate.io has stopped its functioning in various regions or various countries. I think India is not in that list yet, but Singapore, China, US, Canada, and there are like 8, 9, or maybe 11 countries where Gate.io has stopped functioning. So I got an email from them to sell everything or maybe to move my coins outside, and I had to incur a heavy loss there because अच्छा, the coins विड्रॉ ऑप्शन नहीं देते क्या वो लोग? विड्रॉ तो था, लेकिन विड्रॉ किस में करूं? अब ऐसे कुछ कॉइन्स थे ना जो सिर्फ गेट आईओ पे होते हैं, तो वेयर तो शुड आई विड्रॉ देम हॉट टू? वॉलेट में कर लो। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूज का कोई हॉट वॉलेट नहीं है, तो कहाँ डालूं मैं उसको? एंड अच्छा, बाय द वे Gate.io है किस? यार आई थिंक इट इज फ्रॉम चाइना। उसके तो सब मुझे भी वही कुछ लग या रहा था। कोरिया या चाइना का है वो, हाँ, बिकॉज क्योंकि उसकी उसका लैंग्वेज पूरा वही है। यूआई चाइनीज होती है। हाँ, चाइनीज हाँ, जैसे सिमिलर लगती है, चाइनीज और जैपनीज या तो कोरियन, कोई भी मतलब सिमिलर लगता है उनका। कभी कभी ग्लिच हो जाता है तो वो सारा इंग्लिश भी ट्रांसलेट हो जाता Gate.io is one of the oldest crypto to crypto exchange from China, reporting since 2013. है। I think बढ़िया। इसलिए इन्होंने ना बंद कर दिया यहाँ पे। बाइनेंस चाइना भी में बंद है तो ना यहाँ पे। बट बाइनेंस को तो आई थिंक अप्रूवल आ गया था ना कनाडा में। बाइनेंस कनाडा आया है, बट वो बाइनेंस कनाडा कब आएगा यू नेवर नो। बट द थिंग इज, after UAE has kind of created policies for crypto businesses and all, Binance has moved to UAE now. हाँ, वो जब पहली मीटिंग हुई थी तभी वो भाई भाग गया था। तो बाइनेंस का 2 हेडक्वार्टर है अभी रिसेंट, एक दुबई में और एक वो आइलैंड पे था आई थिंक, पे वो लोग Cayman वहां से कहीं Islands. शिफ्ट। हाँ, केमिन आइलैंड में तो था, लेकिन वहां से वो शिफ्ट कर रहे थे, तो कहाँ कर रहे थे नाम में भूल। पहला तो उनका जो पब्लिक था, जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है, वो दुबई में वो लोग ने। दूसरा एक और अनाउंस किया था, वो जो केमिन आइलैंड वाला है वो कहीं शिफ्ट कर, वो नाम याद नहीं, जो भी है I मतलब think वो लोग जब हाँ, तो आई थिंक दुबई में चले गए वो, बिकॉज मैं लिंक्डइन पे आई एम सीइंग लॉट ऑफ जॉब ओपनिंग्स. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Hello. yes, Yeah, yes, yeah. you are. On Yeah. LinkedIn, I'm seeing lot of job openings in Dubai for Binance. Like they're hiring big. So there was somebody who was asking in the group job opportunities and all in this area. So I, if you are interested, just see if that Binance thing helps. Maybe they will, if you have those skills, they might sponsor your work visa and things like that. In LinkedIn is full of Binance crypto jobs. And in UAE, if you just search for crypto jobs, there are so many companies now hiring for blockchain, इंडियन NFTs. इंडियन कंपनीज भी वहां पे मिलेंगी मोस्टली, जितनी भी इंडियन फेमस कंपनीज है। इवन पॉलीगॉन ने भी अपना ऑफिस खोल रखा है दुबई। तो हाँ, टैक्सिंग के लिए भी. सारी, हाँ, रेगुलेशन नहीं है, टैक्सेशन नहीं है उनका। वो भी इशू हुआ था ना, वो जो उन्होंने वो कैंपेन चलाया था उस फंड के लिए, जिसमें वितालिक ने वो 1 बिलियन वर्थ ऑफ सीबा ट्रांसफर किया था। उसमें भी कुछ इशू आया था कि वो लोग को फंड ट्रांसफर करने का परमिशन नहीं मिलता। जितना वो लोग ने डोनेट किया, बाकी का पैसा वो लोग ने वापस से किसी दे दिया था एनजीओ को, मे बी वितालिक के जो कांटेक्ट में था, और बाकी का फंड वहां पे गया, तो पूरा इंडिया में आ भी नहीं पाया। तो वो इशू के बाद वो लोग को रियलाइज हो गया, जो हमारी कंपनी के साथ भी हो, जब हम डोनेशन का पैसा कन्वर्ट नहीं कर सकते, देन वो लोग रियलाइज हुआ। एंड आई थिंक मोस्टली जितने भी कंपनीज हैं इंडिया में हो या जहाँ भी हो, जहाँ पे भी ऐसा रेगुलेशन का डर है लोगों को, तो वो लोग दुबई या सिंगापुर में ऑफिस अपनी खोल ही देते। अभी एक्सचेंजेस मोस्टली सिंगापुर से चलती है एंड स्टार्टअप सारे दुबई से हैंडल। तो ये दो तो हब बन गया। अब मे बी अभी यूएस का रेगुलेशन कैसा आता है, क्योंकि यूएस के रेगुलेशन के हिसाब से भी लोग वैसा बोल रहे हैं कि यूएस भी अब कम्पीट करना चाहता है दुबई और सिंगापुर, क्योंकि करना ही उसके, पड़ेगा. हाँ, क्योंकि उसके रेगुलेशन की वजह से, क्योंकि कुछ क्लियरेंस है नहीं, तो लोग जो पैसा है ना वो अब आसानी से फ्लो होके निकल रहा है यूएस। तो उस डर के वजह से उनको तो मार्केट चाहिए, एंटाइक फील्ड में तो दबा के पैसा वो लोग खींचते, तो वो लोग को करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो फिर तो दुबई और सिंगापुर खा जाएगा। Exactly. In fact, UK say I know many people who have moved their businesses entirely to Dubai. Not only UK, entire Europe. And this is a concerning problem in Western countries that their money is flowing to UAE now. So now that's why Joe यूएई वाले Biden. का सही है एकदम। नहीं, तो यूएई के पास कुछ बचा नहीं है ना, उनको पता है लाइक मिडिल ईस्ट को कि उनका टेल था जो था, एंड नाउ दैट विल आल्सो लूज सिग्निफिकेंस इन सम टाइम, जब ये इलेक्ट्रिक कार्स और इनका ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑल, ग्रीन एनर्जी की तरफ वैसे ही सब जा रहे हैं, तो दे नीड समथिंग टू काइंड ऑफ स्टे अहेड ऑफ द कर्व. So that's why they are emphasizing on all these blockchain and crypto technologies. And that's why we saw बाइडन ने भी जो भी लास्ट वीक या उससे पहले जो भी उसका यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था, तो उसमें वो
उन्होंने कहीं नहीं बोला इसको बैन कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। दे आर लाइक कि चलो अब सीबीडीसी पे काम करो, ये टेक्नोलॉजीज को इस तरह से इन्वेस्टिगेट करो कि किसी का पैसा ना खोए, कोई स्कैम ना हो या कोई गलत एक्टिविटीज ना हो। बट जैसे इंडिया में नहीं किया बैन, वैसे ही नहीं, कुछ ऐसा है नहीं कि इसको बैन करना चाहिए। बैन तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम ऐसा आया था बैन कर, वो क्लियरली बोल देते कि हमको बैन तो करना ही नहीं, क्योंकि हमको बैन करना होता तो हम इतना सब करते ही नहीं, इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया इसको खाली सेटल डाउन करने के लिए, बैन ही नहीं करना तो स्टार्टिंग में कर देते। बट वही वहाँ पे डर बैन का नहीं, वहाँ पे डर है टैक्स का, क्योंकि यूएस का टैक्स मतलब 50% 60% टैक्स नॉर्मली वो लोग गिन लेते हैं, या अनरियलाइज गेन पे टैक्स मार देते हैं, मतलब वहाँ पे टैक्स ही अजीब चलता है, तो लोग टैक्स से ज़्यादा डरते हैं। But still, guys, I have no idea about how Indian taxation is gonna happen. They just gave out 30%. But can you guys put some light on that if possible? I would want to know some more about it. We just If you have have to any wait for information though. the regulation. No, there is no any other news apart from that 30% tax. Okay. How they gonna charge? If there will be any slabs on it? There is no news. People are just waiting for the this bill, crypto bill, which may be gonna take another 6 months or maybe 4 months, because they promised last time, at the time of this applying this 30% taxation. In an interview, she said that within 6 months, I'm assuming that crypto will be prepared to deliver in to the citizens. So maybe if they are already like it's been like 2 3 months already, so maybe possible they're gonna be come with the crypto bill, and then they will decide how the taxation gonna happen. And until unless we don't have any crypto regulations, how they are seeing the crypto market or crypto coins or all the other project like products, we cannot even predict how the taxation will be, because 30% we are just seeing the 30%, but I am not assuming that there will be any another you can say slab. There should be any a particular slab that if you are earning more than 10,000 or 15,000 or 20,000, then you have to pay 30%. If you earn below like But for 10,000, then you have to pay the small amount of maybe 10, because even in fantasy games there is a slab. So I'm not like assuming they are not gonna include in crypto. It was bit early to introduce crypto bill, because they also are aware about how you can say how much money is into crypto and people are gambling into it. There is a sad part as well, because people who don't have idea about crypto, they're just buying and just putting their money into crypto to become rich. So that gonna be also stopped when they realize that it is still in a gray area. Second thing, uh, people are putting the money, people are making money, so the government should also thought that might be gonna be make some taxation with that, until unless we are not prepared to deliver the crypto bill. So the only hope is the crypto bill. Once it comes to the market, then we can be clear. Until unless, nobody can say anything, because even from the government end there is nothing clear about that. a lot of uncertainty. Yeah. I can add something here, Yeah. not about India, but how it is working in Northern America. So I'm in Canada. I was filing my taxes this year. So it is very strange that even if I have moved my coins out of my wallet, rather like instead of selling them, I've just moved it to some other wallet to buy NFT or maybe do something else. That event is kind of treated as a taxable event. So at that moment, whatever the price of my coin is, that is treated as my profit, and that is being added to my taxable income. So that is one thing I observed. Second thing is, if I am receiving coin in my wallet, for example, I transferred USDT from Binance to crypto.com or like wherever. So in the wallet where I am receiving those coins, that is treated as a income, like as I earned $100 kind of. So so when I was going through my statement, like I used, there's a software called Coinly, which helps you kind of pull all your investments from different exchanges and creates a report for you, which you can use for your tax purposes. It was showing me so much profit, and I know that I'm not in profit because all these have happened recently. So it was showing me that I'm in profit, and profit was good. And then I kind of went deep into the entire analysis, like entire report, and analyzed how it is showing me this profit. Then I realized that each coin I moved outside my crypto.com or Gate.io app. The price of that coin that day is treated as my profit. And every time I moved coin to my crypto.com, like USDT,
it also treats it as income. So maybe all these kind of things will come in India also, and it is very confusing. Even my tax consultant is not able to help because nobody knows what's going on. So yeah, exactly. That's what they're doing, right? And I So think I think that will CBDC. be similar. Yeah, similar will be in India because even there was a line while mentioning the 30% taxation that even if you receive a gift in any digital form, basically in crypto, that will be also get taxed 30%. So as the same scenario, if you are receiving any amount of crypto asset on your wallet, so if you sell it, then you have to pay 30% off, similar to the Canada. Yes. Another interesting thing I forgot to mention is they are also asking for your hot wallet's public address. Okay, so for example, if I have Phantom MetaMask, they're asking to put that, and that software is able to go inside that wallet using, or maybe see the blockchain explorer using your public address, and is able to calculate how much coin you moved here, and what is the worth of that coin now, or did you swap that coin from your wallet to some other platform. So all those details it is able to fetch from the blockchain explorer of that particular network, and is able to calculate the tax. So all these things are happening, just to tell you guys in advance. It might be coming to India also. Okay, so can't speak. Maybe there is an issue. So if anyone have to raise your hand, I think Nikhil, you can leave the room and nine backs can be shut off. So if anyone have any discuss, or otherwise we gonna be this session. Hello, hello. Yes, bro. So I had this question about 4 year cycle. Yeah, Uh, we are also hoping for the same. At least I am hoping for that. That if that cycle repeats, that means as per the calculation 2024 market, or maybe before 2024 you can mid after mid, and then mm, you will be see and then. no, But no, people are coming up with their predictions that the market is not same as per the previous. It has changed a lot. It has been matured a lot. So that can be possible that we can see another bull market before this 2024 as well, or maybe before 2023 as well, because market haven't dumped previous cycle. Because if you see like last cycle is around 17, BTC even dumped from 19,000 to 3K, but right now the top is I think yeah, 69, yeah. and right now BTC is about 38 39. So it haven't dumped a lot as compared to the previous cycle. So that's why you cannot predict that accurately if you compare the previous cycle with this cycle, because now nothing is similar. If you are comparing it, it should be go at least below 20,000 from here, and then you can say, oh, the market is working the same way it is worked in the previous cycle. But still I'm hoping for that. Yeah, it can be possible. Lots of people have invested a lot of amount, that's why it is not going below 30K or maybe 35K, and that will be possible. It is the bottom, and from here it will only go upside. And in if the cycle is actually going to repeat the 4 year cycle, then into 2024 we will be see maybe 150K or maybe 200K as well, which is nothing you can say imaginary. It can be possible if the money comes into the market, and there is a lots of area where the market is the money is staying there, and it can be diverted to the crypto market and can join the crypto market, grow it. So yeah, I'm also hoping that the 4 year cycle gonna be repeating, because before that I have no plans into crypto. Karma, I would like to ask you one thing. Do you think that this is the bottom, or like I am a person, I go according to the past, according to how the charts were in the past. So I am still waiting for a break below 20K to buy Yeah, even I am waiting. I think most of the back people into, is waiting for the below my 20K. major coins. Yeah, but like the thing is, whenever I talk to people like this, they don't see the crypto cycles, the halving cycle of 4 years, and they just be like, "कि नहीं भाई तू dumb है, ठीक है क्या?" Like honestly, my goal is 12 to 15. That is my zone. So yeah, Yeah, for it, BTC. it can go. But people, That's what I'm saying. If the market yeah. is going to repeat it, then it has to go below 20K. But If the market is don't you going to think? be But the don't you think similar it to will the repeat previous it cycle. because it has been doing it But historically no, if you after see all right halvings? now, no, if you see right now, if you compare the last cycle, it is not repeating the same cycle, because right now, if you compare the percentage, it is not even 50% Yeah, below yeah, that. but this is not the end, And right? This is not the end of the cycle, right? That is also there. We are still waiting for how.
market's gonna No, evolve no, now but further. if but when we talk about the cycle, it actually creates a pattern. It goes upside, and then it create a downtrend, and Correct. it downtrend ends when it start making another uptrend for the next cycle. But right now, even if it start going down direction from here, then you cannot hope for you can say uptrend in 2024, because then it is not creating a cycle as per the previous pattern. Like I'm So expecting. that's why I'm One saying second, it one is second, one not second. I'm repeating I'm it. actually expecting a cycle bottom for this year, like around end of second quarter or start of third quarter. And if it goes below that, I'm not even expecting it will be gonna stay there for even 1 day or maybe 2 day, Yeah. because They'll there just is a liquidate and just boom. mass buying. Yes. Yeah. Liquidate or boom. That will be the yeah. What I think is, whenever people start saying, right, it is the bottom, or it is going to be further down, or now the bear cycle has come, now it will be winters for years. That's when the market start going up. And whenever the people say, oh, it is bull, it will go 100K, 150K, 200K, 250K, that's when the market start dipping. So I've always seen, yes. बाइक क्यों डरा रहे हो? हजार भी बाय नहीं करेगा Like, न्यूज़ पे तो. So Samit, like again, continuing to the same thing around the events, although it's not related to Bitcoin, but अगर ये like जो देख रहे हैं ना कि अब रशिया चाइना को बोल रहा है कि अब आओ हमारी हेल्प करो, मतलब अगर ये सही में हो जाता है तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज कोई सा भी इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज स्टॉक, रियल स्टेट और क्रिप्टो, कुछ कुछ मतलब नहीं बनता फिर जिंदगी का, क्योंकि देन इट इज गोइंग टू बी अ मास वॉर, राइट? अब लाइक व्हेन द कंट्री, हाँ, बाय एनएफटीज. The only thing which is helping me right now is DeFi. So I have put all my coins whichever I could in these DeFi or staking. I don't know if these platforms also ditch us and run away. Baby is trying to say something. Yeah, baby. Baby, भाई मैं तो बोलता हूँ ये आयरन 2 हफ्ते में पहुंच गया. निकल देखो ना, निकल. मतलब उतना उतना गोल्ड भी नहीं बढ़ रहा है जितना आयरन बढ़ रहा है. एंड वॉर के टाइम पे लोग बोलते हैं कि राइट डिमांड ज़्यादा हो जाती है, वॉर होता है, सेल्टर्स के लिए चाहिए आयरन की डिमांड बहुत हो, उसके लिए उसका बहुत ज़्यादा. पर पता नहीं इंडिया में क्यों बढ़ रहा है कि वॉर तो अभी ऐसी कंडीशन में तो है नहीं कि आयरन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है इंडिया से भी. स्टिल बहुत रेट बढ़ा, ऑलमोस्ट आई थिंक 100 क्रॉस कर गया आज, एक दो. हाँ, इंडिया इंपोर्ट करता होगा ना आयरन बाहर से, तो मे बी इसलिए बढ़ पॉसिबल है. रहा होगा. गोल्ड बेचारा हिल नहीं रहा है, आयरन जैसी चीज. ऐसे तो देखो कुछ भी जो चीजें इतनी नॉर्मल लगती है उस पर भी इन्वेस्ट करके देखो. ऑयल का ईटीएफ, आई थिंक ऑयल का ईटीएफ है इंडिया में, है कि नहीं ऑयल के ईटीएफ? नहीं यार, मतलब निकल का ड्रीम ट्रू हो जाए, वॉर ना हो, सो मेनी पीपल विल डाई. पर क्या पता, नहीं बाय द डिप के लिए तुम बचे, हम बचे ही ना तो क्या करोगे? वही तो बोल रहे हैं, लाइक होप तो कर लेंगे यार आ जाए, लेकिन उसके लिए बचेंगे तब ना. अरे वर्ल्ड वार आ जाएगा तो भाई क्या पता, तुम भी लपेटे में आ जाओ, हम भी लपेटे में आ जाओ. हाँ बाय द वे मेटावर्स का काफी ज्यादा है इंडिया में, एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारे एथलीट, सारे आर्टिस्ट का खुद, किसका? बहुत सारे आर्टिस्ट, आई थिंक सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज सबका ही है. टेबल टेनिस में कहीं देखा था, टेबल टेनिस में क्या मजा, बट स्टिल खेल रहे हैं, ओकलस के खेलेंगे और कैसे तो है धीरे धीरे. बट आई थिंक आर्टिस्ट के लिए बेस्ट है मेटा. एनएफटी भी उन्हीं के ज्यादा काम में आता, मेटावर्स भी सबसे ज्यादा उनके काम. आई थिंक जिसकी फैन फॉलोइंग जो वही है ना, पब्लिक फिगर है, उसके लिए तो बहुत सारे कंपनीज भी आ गई हैं जो आपको मेटावर्स बना के देंगे विद इन ऐप. आई थिंक इंडिया में एक ऐप चल, वो लोग मेटावर्स का जो वो बना के आपको देते हैं वहाँ पे आपके मेंबर. तो जैसे आपका अपना ये जूम ऐप होता, आप क्रिएट कर लो रूम, इनवाइट दे दो, उन लोगों को बुला लो, लोग आगे ज्वाइन हो जाए. सिमिलर टू मेटावर्स, आपको इतना एरिया दे देंगे, आप हमसे ही फेमस. बात बुल मार्केट होता तो यही सारी चीज़ों पे अभी तक तो डबल हो जाते. रोज ही पॉजिटिव न्यूज आती है, कोई इफेक्ट नहीं. बुल मार्केट में वहाँ पे एक बंदा ट्वीट कर दे रहा है और तुम्हारे पैसे 10 गुना हो गए. सो किसने किया था सतोशी नाकामोटो, अभी थोड़े दिनों पहले, सैमसंग, तोशिबा, अरे और बहुत पता नहीं. पुराना जोक था वो, उसको किसी ने भेजा होगा, आप डाला होगा. और फिर भी नहीं हुआ पंप, ये भी लगा तो कुछ पड़ा है नहीं बेचारा. अभी वो बंदा मतलब कुछ भी फालतू भी ऐसे लिख देता ना कोई, वो कॉइन अगर जो है भी नहीं तो लोग बना के तुरंत पंप कर देते थे. फ्लो की. इतना पैसा था. हाँ, क्योंकि मतलब फालतू से फालतू. अरे ये आडा का आया था, वो था ना फॉग ऑन अ रोड, उनका आई थिंक टैगलाइन है आडा का. उसने वो खाली डीपी लगाई, लोगों ने उसका मतलब निकाला, वो मतलब सर्च किया तो देखा वो उसके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ, मतलब ये आडा बोल रहा है, आडा पंप कर दिया. भाई हद है तुम्हारा.
यहाँ पे वो बोल के कर रहा था, हिल ही नहीं रहा है। तब लोग बोल रहे थे भाई क्या पावर है, क्या पावर है। मैंने भाई बुल मार्केट में सभी पावर, कुछ भी किसी भी एग्जैक्टली। चीज पे रखोगे सोना हो जाएगी सारी चीज। अभी करके दिखाओ ताकत हो तो। अभी अरे यार यहाँ अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है। यार इंडिया जितना महंगा हो गया पेट्रोल यार। मैंने परसों अपनी एसयूवी भराई, लाइक 40-45 डॉलर में पूरी 40 लीटर बढ़ जाती थी। $79 में मेरी पूरी एसयूवी भरी। मैं आया भी इंडिया से वापस 6 हफ्ते बाद। मैंने कहा ये क्या हो रहा है इधर। कुछ ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ होगा फिर। हाँ कुछ खास डिफरेंस यार, लेकिन सैलरी कम मिलती है ना फिर यहाँ उस हिसाब से। तो ये भी तो देखो। यहाँ थोड़ी ये तुम्हें तो लाख रुपए साल महीने की सैलरी दी है, तो लाख रुपए साल की भी नहीं मिलती ढंग से। और टैक्स तो इतने ज्यादा वहाँ होते हैं इधर। $6 तो यूएस में पहुंचा था उस कंपेयर, तो आई थिंक $10 तो वहाँ पे ही पहुंच गया होगा। अरे यार, नहीं नहीं इतना तो नहीं था। 1.9 $1.9 पर लीटर में डला था। इट्स लाइक तो वो 60। हुआ वो होगा। जो $6 तुम वो बोल तो रहे हो ना, वो वहां पे क्या होता है, यूएस में गैलन में आता है पेट्रोल। हाँ तो हाँ, गैलन गैलन की में, बात कर रहा हाँ यहाँ पे लीटर में आता है इंडिया की तरह। हूँ यूएस तब मैं। में 2.5-3 लीटर, मतलब एक गैलन में 2.5-3 लीटर होता है, तो वो गैलन चला गया होगा 6। तो महंगाई तो बहुत ज्यादा, लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ग्रोसरी व्रोसरी सब बहुत एक्सपेंसिव हो गया। मतलब दूध, 3 लीटर दूध जो पहले 2 लीटर $2 कुछ में आता था, कल मतलब मैं पहली बार गया कल शॉपिंग वॉपिंग करने इंडिया से आने के बाद, तो $4 का हो गया दूध। लाइक ऑलमोस्ट डबल हो गई प्राइस। तो हाँ, तो इन्फ्लेशन तो बहुत भयंकर यहाँ पे आ रहा है, लाइक नॉर्थ अमेरिका में। और दूसरी प्रॉब्लम है कि इनका खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना, ये सारा चाइना से मंगाते हैं। और और ऑयल जहाँ से लेते थे वो भी बंद कर दिया इन्होंने, अभी वेनेजुएला के पास जा रहे वो फोन भी नहीं उठा रहे बाइडेन का, तो यूएई वाले तो। हैं। हाँ, यूएई वाला तो फोन भी नहीं उठा रहा है। आई थिंक वेनेजुएला से बात, वेनेजुएला वाले भी ना बोले थे, पता नहीं, मतलब प्रेशर है, पैसा भी है तो मना लिया। यूएई वाले को तो नहीं मना पाया। पाएंगे ना, क्योंकि वो ट्रम्प के साथ उनके अच्छे थे यार। ये बाइडेन ने आके बहुत खराब कर दिया माहौल पूरा। तो ये सब चलता रहेगा, अब देखो कब तक होता है। इट्स लाइक टू 2024 तक बहुत अनस्टेबिलिटी है वर्ल्ड में। दैट्स व्हाट एनीबडी हु बिलीव्स ऑन एस्ट्रोलॉजी कैन सी। कुछ ना कुछ बीमारी और ये सब नाटक चलते रहेंगे। 2024 में सही हो जाए, मैं तो उससे तो मैं बोला सही पैटर्न जा रहा है, जान दो। अब तो कोई बोलता है ना भाई क्यों नहीं बढ़ा, मतलब बढ़ना भी नहीं चाहिए भाई, 2024 तक वेट करो, कुछ तो एक्यूरेटली जाएगा। बाकी एग्जैक्टली। कुछ तो पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। मुझे भी, तो मैं भी वही बोल रहा था। हाँ, सभी को नहीं क्या करना है, क्या नहीं मतलब कहना? वही कि क्लोज क्लोज करने बोल रहा अच्छा, रूम क्लोज करना। हूँ। चलो ठीक। कोई नहीं, बियर मार्केट का इफेक्ट नहीं तो 1000, मोस्टली सारे ठीक। 800 या 900 एवरेज हैं, बाकी सारे सेंस। एग्जैक्टली, यहाँ पे एंड यू नो 100 व्हाट। क्रॉस हुआ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, और एक चीज और, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग इन एनएफटीज और वेयरएवर, इट दिस हैपेंड विथ मी और मे बी संबित आल्सो। बहुत सारे हमारे लाइक द एनएफटीज आई इन्वेस्टेड इन, दे दोज वर द डेवलपर्स वर फ्रॉम यूक्रेन और रशिया में भी, and those projects are gone like to zero now because no development is happening, and those guys came into their Discord channels and told that because of this Russia-Ukraine war, I do not know if they're using that as an excuse or they really belong to countries, but they said we cannot continue our projects. We are one of the admin of the Discord say I am going to fight against Russia, so I am not भाई रग available. पुल है, फिर तो रग पुल है। And that project, it was highlighted on Magic Eden के front page पे, like it was so much hype project, first NFT movie ever, Space Clux करके था। And like if you see the trading, lot of trading happened on that NFT project. I didn't sell my NFTs, but people did make lot of money in the like just flipping those NFTs. But those guys are like have discontinued, and this is not only one project. There are other projects also which were like kind of Axis Infinity on Solana. Those projects have also discontinued the development. So just make sure whenever you are investing in these projects, what is the अरे development team? वो सॉल्विंट्स तो बचा है ना कि वो भी गया। Solomon is still there. It is there. हाँ जी। वो तो Hong Kong का है। Guys, any of you are into SMU, Solana Monkey University? You've No, no, ever like gotten any NFTs out of that, no, no. of that project? I am not. Sambit might know if he Ambit? has not slept yet. Sambit, are you there? Ambit? Yeah. I think he मे slept. बी गॉन। ओके कोई नहीं, Okay, but एनीवे guys, तो what do बंद you कर guys, दे। what do you guys, I'm sorry, या गो फॉर इट। space sustainable down the line for trade? Or would it be better to just trade the coins itself, like Ethereum and all, rather than trading the NFT on that blockchain? What do you think? I don't trade in it, but still, we cannot compare it with worthy too. If you have expertise in verifying, then people are making good amount, and even more than trading
yeah, it worth it, are able to buy, and if you are able to get it, the most Hmm. part is most of the people Oh, are not even they that is want very to buy good. it, but they are not able to get it, and that's the But why reason, just that's people why do worth it, NFTs? because lots Like of couldn't people are buy it behind because that. USDT खत्म हो गए थे. I am actually irritated with some NFT projects because there's a lot of process involved. Like you do not have so much time, right? You have to be in the whitelist, and then you Yeah. have to be active on the Discord server. Then you will be on whitelist and invite 10 friends and blah blah blah. It is very difficult to get into good NFT projects nowadays. So भाई ये But डिस्कॉर्ड वाला तो honestly, बिल्कुल ही बकवास है। बहुत बकवास है डिस्कॉर्ड. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड. वो मेरे को तो लिटरली एनएफटी ऐसा लगता है एनएफटी जस्ट अ शिट कॉइन विद ब्रांडिंग ऑफ गैरी वी और सम लोगन पॉल का ऐसे ब्रांडिंग करके दे दिया. बट है तो एंड ऑफ द शिट कॉइन ही. दैट्स व्हाट आई फील समटाइम्स. यस, You know, after seeing all of the like rug pulls that are सो happening in the NFT space, एनएफटी का है यूज ही वो केस हाइप देखने बस. जाओगे, या सिंपली यूज केस देखने जाओ ना एकदम सिंपल वे में, तो एनएफटी का यूज क्या है? सबसे ज़्यादा यूज ये है, मेटावर्स में यूज होगा। इट कैन बी यूज एज ए ऑथेंटिकेटर, लाइक वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर जो आपके पास एनएफटी है, आप ऑलरेडी वहाँ पे चेक इन कर सकते, कॉन्सर्ट हो या कोई भी इवेंट हो, आपके पास वो एनएफटी है, आप इन्वाइटेड हो, जस्ट लाइक इन्विटेशन। वहाँ पे आप अगर जो अच्छा. हो तो एनएफटी में एज अ प्रॉपर्टी भी आपको एनएफटी में मिलेगा, क्योंकि जब सपोज कोई भी मेटावर्स है, तो उसमें जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपको एज अ सर्टिफिकेट वो एनएफटी मिलता है। तो बेसिकली दैट इज द यूटिलिटी ऑफ इट। ओनरशिप. बट उसके ओनरशिप. अलावा जब, हाँ, काइंड ऑफ ओनरशिप सर्टिफिकेट बोल दो, बिकॉज जो भी आपका प्रूफ है वो वेरीफाई होगा ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे वेरीफाई क्या करेगा, उसका हैश रेट जो होगा, मतलब हैज द एड्रेस, वही वेरीफाई होता है। and वही सिंपली एक काइंड ऑफ प्रूफ है कि हाँ, आप जिसके ऑनर हो उसको आप ऑथेंटिकेटर बोलो, ऑनरशिप बोलो, जो भी है वही है। सो बेसिकली वो इसका यूटिलिटी है। बट अब वो सपोज एक एनएफटी आता है मार्केट में, एंड वो जैसे सोलाना पे आया कोई, तो वो किसी मेटावर्स में बिलोंग कर रहा होगा, बट वो मेटावर्स बना भी नहीं होगा, वो मेटावर्स अभी स्टार्ट भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उसके पहले वो एनएफटी ट्रेड होते होते इतने महंगे हो जाते हैं कि वो लोग भूल ही जाते हैं कि इसका रियल पर्पस क्या था, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ जाती है। लोगों को लगता है एनएफटी हम खरीद लेंगे एंड बेच देंगे, बाद में वो और महंगा हो जाएगा, एंड वो चीज़ होती रहती है। एंड कुछ लोगों के नाम पीछे लग जाते हैं तो उससे और महंगी हो जाती है कि यार ये बंदा ज्वाइन हुआ, ये सेलिब्रिटी ज्वाइन हुआ, डेट मीन्स ये वर्थ। अभी जैसे स्नूप डॉग को देखो, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ जितने भी फेमस मेटावर्स प्रोजेक्ट है, सारे में उसको लैंड दिया है फ्री में, एंड पता वो नहीं क्या क्या बोलते लैंड हैं कि वो खरीदा है खरीदता है और बंदा लोग आके। उसके आसपास और खरीद रहे. हाँ, माय तो गॉड, उसके बैंकॉक आसपास के में जितने भी है लैंड उसका. होते हैं ना, हाँ, उसके आसपास के जितने भी लैंड होते हैं ना, उसका रेट आप अपने आप ही बहुत बढ़ जाता गंदा, है। बहुत. लाइक तो आई हैव हाँ, तो क्लब हाउस पे मिला है. आई मेट समवन लाइक आई एम एक्चुअली हु इज इन द मेटावर्स राइट नाउ बिसाइड अपना क्या स्नूप. आई एम लाइक वेरी गुड ब्रो. और वो क्या बंदे ही को फ्री में बोलूंगा मिला है। को फिर. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड क्या सिंपली ही ये मिलेगा, क्या ही तो मिलेगा बाय बिजनेस यू नो स्ट्रेटेजी ऑल ऑफ होती है, दिस. हाँ, बिजनेस या आपको स्ट्रेटेजी है किसी का बस ये रेट बढ़ाना। हाइप के लिए. यस, होती है। लोग एनएफटी बोलते हैं, यार ये एथलीट ने एनएफटी खरीद लिया, तो अब हम इसका एनएफटी खरीदेंगे तो ये वर्ती होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या पता वो कम्युनिटी ने गिफ्ट किया हो, या पीछे मार्केटिंग हो कि भाई तुम ऐसा दिखा दो कि मैंने खरीदा है। कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है मैंने खरीदा, खाली डीपी लगा देते हैं, लोगों को लगता है कि वो भाई ने खरीद लिया। नहीं खरीदते वो लोग को फ्री में मिलता है। वो लोग खाली एक ट्वीट करना होता है कि मैंने खरीद लिया इतने। ट्रांजेक्शन आप फेक दिखा सकते हो, या वो पैसा वो लोग ने जो भी लिया होगा या दिया होगा, वो एज आ उनका फीस होगा, तो वो वहीं से उसका नाम हो जाता है, फेमस हो जाता है, लोग बाय करने लगते हैं, उसका रेट बढ़ जाता है। सिंपली वही है, बाकी तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक नहीं। 100% agree. exactly, lot of MMA fighters, like the But famous but MMA fighters also. guys, have you seen Ready Player One? Anyone of Nikhil you guys bolo. seen? Josh, you've seen Ready Player One? Yes. Yeah, निखिल, योर वॉइस kaise इज use ho? ब्रेकिंग। Yeah, I'm in the lift. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. नहीं, काय को तेज। Hello. Hello. Yeah. हेलो। Hello. Audible? यस यस। Yeah. Yeah. I just wanted to know, like, what are your perspectives about these so-called ETH killers like Solana and Polkadot and even Cosmos? So, what do you think about these three cryptocurrencies? So first of all, there is not nobody, or you can say a competitor as Ethereum, because Ethereum is a kind of big market, right? The utility of the blockchain basically is in a huge amount. And if you compare with Solana, Solana is trying to compete. They are trying to increase the TPS, and they are trying to, you can say, do better job which Ethereum cannot do. But the problem is it is not decentralized, and the
first thing that you have to always keep in mind, but when you are in any particular project for a long term which have a great utility, it should be decentralized, and the main focus will be on decent, because even if you compare BNB with Ethereum, then still BNB will, you will find that BNB is more worthy than Ethereum, because the transaction speed is fast and the transaction fees is also very low, Karma, but Karma, that is can I just, centralized. yeah, that's what I wanted to say. Like, be centralized. How could you consider BNB better than, Got it. No, that's what like I'm पूरे saying. node No, CC के I अंदर think, yeah, I think you joined in Yeah, I between. got So I was disconnected. saying Sorry. that you cannot compare anything, neither Solana or BNB or any other project with Ethereum right now, because the main advantage is that Ethereum have, it is decentralized, and it is not fully decentralized, but at least it is far better decentralized as compared to other projects like Solana being named as a Ethereum killer, but Solana is also centralized. If you see the nodes are very low. I think under 1000. Now they are above 1000 something, or I think 1015 or maybe something like that. But still, they all are operated by the VC funders, and majority of the stake on Solana still right now owned by the VCs. But if you Yeah. see on Ethereum, have I think only 15 or 20%, which for VCs. But on Solana they have more than 65%, and they also lied multiple times about their supply. They changed their total supply multiple times. That was very suspicious, because you cannot do that. If you are a legit project, if you are coming to market for a long term and do something different, you should be transparent. But they lied multiple times, and that's where people found it's still fishy. And the whole backing is from the VCs. People are not owning that much as compared to the VCs. That's why it's called that it is being controlled by the VCs. All the nodes are being controlled by the VCs. So you cannot say that it is a you can say a worthy competitor of Ethereum. Same goes with the BNB. BNB even it is a part of Ethereum. So BNB was a fork of Ethereum. So they created a fork, and then they created their Binance chain. But Binance chain still works on a, I think 10 or 15 nodes, which is operated by the Binance itself. So that is also centralized. So when you're comparing something centralized thing, you have to compare it with the centralized to centralized. You can compare BNB to Solana, but you cannot compare it to Ethereum. That's why Ethereum has an advantage, and then it also have a disadvantage, because when you are creating a decentralized network, you have to pay the miners, you have to pay the validators, and how you gonna pay it? So whenever you're paying the gas fees, that gas fees goes to the miners or the validators. But on a centralized network, the money, the authority that whoever the organization is, you can say operating the blockchain, they don't need the reward. They just want user to have a good atmosphere while using their blockchain. But on decentralized, actually the no, that network is being run by the public, like a normal public, and they are investing their time and they are investing their money to operate that node, which can help to run the network. So they should be get rewarded, and that's how they are making money. So whenever you pay the gas fee, people are worried about the, like Ethereum has a high gas fees, that's why we are shifting to Solana. Yeah, it can be, because using Solana you are not paying a gas fees, because the VCs don't want you to pay the gas fees higher amount, because they are operating the node, and they are controlling the node, and they don't want any money from you. It is not simple as that. I'm saying, I'm just explaining in a simple way. But when you give that authority to a general public to run a node, which we call it decentralized, then they want to earn. You are not gonna, like अभी मैं तुमको बोली यार तुमको ये माइनिंग शुरू करनी है, बट if you are mining for a month and then you are not making any money, then why you gonna keep mining it? So if you are making money with the mining, then only you gonna keep doing the same work, because you have invested your time, you have invested your money behind the electricity usage होता है उसमें. तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं, देन दे गेट रिवॉर्डेड. सो उनको पैसा मिलेगा तो नेटवर्क चलेगा, एंड इसीलिए वहाँ पे जो वी आर पेइंग द गैस इज वट एवर द गैस इज वी आर पेइंग, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू अ पर्सन हु इज हैंडलिंग द नेटवर्क, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो वहाँ पे वो वर्दी होता है, बट देन लोगों को ये लगता है यार हमारा गैस वेस इतना जा रहा है,
तो फिर हमको फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन कंट्रोल कर रहा है। बट द मेन प्रॉब्लम इज सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। अगर जो आपको सेंट्रलाइजेशन चाहिए, गैस फीस आपको आसानी से लो पड़ेगी, बट इफ़ यू वांट डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ टफर टास्क। लाइक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क अभी के लिए तो पीओएस में या पीओडब्ल्यू में भी कम्प्लीटली नहीं अवेलेबल है, which supports smart contract like Bitcoin है, but still it doesn't support smart contract. So Ethereum is the only right now which supports smart contract, which have the all the power that provide you the maximum amount of advantages being a decentralized network. तो Solana हो गया, Avax हो गया, Avax still a good project, but still वो compete नहीं कर सकता because Ethereum have a advantage being a decentralized, being a first comer and being having a largest developer community. So उनके पास जितने डेवलपर है आई थिंक पूरे बाकी के क्रिप्टो कम्युनिटी के पास नहीं होंगे टोटल मिला के भी इतने डेवलपर्स इथेरियम में। इसलिए इथेरियम के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं यू विल फाइंड लाइक दे आर डूइंग वेल एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट। सोलाना में अगर जो NFT आ रहा है, इथेरियम में NFT आ रहा है, नेट इथेरियम वाला ज़्यादा वर्ती होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, इवन गेमिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो वो गेमिंग प्रोजेक्ट्स भी बाकी गेमिंग प्रोजेक्ट के बाकी इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट से ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज उनके ऊपर डेवलपमेंट काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो गया है, उनके पास डेवलपर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से इथेरियम किलर है नहीं। एंड स्टिल 2.0 की हम लोग वेट कर रहे थे कि उसके बाद मे बी जो स्केलेबल इशू है, जो गैस फीस का इशू है, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर जो इथेरियम गैस फीस का इशू सॉल्व कर देता है उसके बाद उसका कोई कंप्यूटर रहेगा ही नहीं। क्योंकि सोलाना आया था मार्केट में यही बोल के कि यार गैस फीस इथेरियम में बहुत है, हम ये सॉल्व करते हैं, बस। बाकी स्पीड का भी इतना कोई इशू नहीं था। अब 2.0 में ये सब बोल रहे हैं कि हो जाएगा, बट 2.0 आएगा कब? क्योंकि 2 साल ऑलरेडी हो गए। तो अभी लास्ट वीक आई थिंक 10th मार्च को ही, लास्ट वीक भी नहीं हुआ, 10th मार्च को ही उनका जो लास्ट वो टेस्ट नोट था वो पब्लिक हुआ है, मतलब तो उसके बाद अब उनका डायरेक्ट बीटा वर्जन, मतलब बीटा बोलते पब्लिक वर्जन आ जाएगा। वो मे बी अप्रैल के स्टार्टिंग में या मिड तक 2.0 इनरोल हो जाएगा। एंड वो इनरोल होने के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर वो 60% उसका पूरा कन्वर्जन जो मर्ज है, मर्ज के बाद का 60% पूरा कवर कर लेगा। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कितना स्केल ये कर सकता है। दैट मीन्स अगले 2024 जो साइकिल की बात करें उसके पहले इतना क्लियर हो जाएगा कि क्या हमको इथेरियम किलर की ज़रूरत है, क्या अल्टरनेट की ज़रूरत है, और अगर जो है तो कौन सा है, और नहीं है तो फिर आप ये सोलाना वोलाना सब भूल जाओगे, सारे मार्केट से गायब हो जाएंगे। मे बी इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। थैंक यू कर्मा, यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल यार। मतलब मेरे को बहुत ये सब गैस फी वगैरह के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि क्यों इतनी गैस फीस है इथेरियम की एंड ऑल दैट, बट आपने बहुत अच्छी तरह मुझे एक्सप्लेन करा। थैंक यू। गैस फीस के पीछे बहुत सारी लॉजिक है, बट ये सिंपल लॉजिक इसलिए क्योंकि जब आपको सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज में पता करना हो तो ये है। लाइक अगर जो मैं खुद कुछ ऐसी चीज़ चला रहा हूँ, तो मैं अगर जो ये अज्यूम कर लूँ कि मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए जो भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटर इतना है मेरा, बट अगर जो वही चीज़ कोई पब्लिक में हो रहा है, लाइक पब्लिक कंपनी चला रही है, तो वहाँ पे तो लाइक लोग बैठे होते हैं ना, उनको तो पैसा कमाना है। अब पैसा नहीं दोगे तो वो तो भाग जाएगा बंदा, तो वो पैसा उनको प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, भले उससे वो अपना रेट बढ़ा देंगे। एंड सेकेंड थिंग, इथेरियम का गैस फीस का इसलिए भी इतना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। आप अगर जो अज्यूम करो कि जितना वीज़ा ने आई थिंक वीज़ा मास्टर ने पूरे 7 साल लिए थे ट्रांजेक्शन करने में, उतना इथेरियम ने सिंगल हैंडली 1.5 साल में उतना ट्रांजेक्शन। तो आप अज्यूम कर लो कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना डिमांड। तो जब डिमांड है तो डिमांड में वही आती है प्रायोरिटी। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो वो जाता है वैलिडेटर के पास, वैलिडेटर उसको वैलिडेट करेगा, तब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। एंड अगर जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के रिक्वेस्ट आते हैं तो वैलिडेटर आपको वो गैस फीस इंक्रीज कर देगा, फिर वो प्रायोरिटी पे जाएगा। जो भी बंदा ज़्यादा पे कर रहा होगा गैस फीस, उसका ट्रांजेक्शन पहले वैलिडेट होगा, देन वो कंप्लीट होगा। इस वजह से गैस फीस बढ़ती है। तो बहुत सारे रीज़न है, खाली यही सिंपल रीज़न नहीं है, बहुत मल्टीपल रीजन, क्योंकि उनका साइज़ भी छोटा है ब्लॉक्स का, वो भी रीज़न है। तो बहुत रीज़न है, ऐसे नहीं, बट सिंपल वे में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न। एंड जैसे ये आपका कॉस्मोस हो गया जो कि एक्चुअली में दे आर लेयर जीरो, कहते हैं कि लेयर जीरोज हैं, तो उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। बहुत लोग आगे बोलते हैं यार ये
इथेरियम को खा जाएगा, ये उसको खा जाएगा, बट बेसिकली दे आर लेयर 0, इथेरियम लेयर 1 है। जो आपका मेन नेटवर्क होता है जिस पे सब होता है वो लेयर 1। लेयर 0 एक्चुअली में आपको वो बोलते बेस देता है जिसके ऊपर लेयर 1 बनते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं लेयर 1 के ऊपर, लेयर 1 के ऊपर देन प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो सोलाना को या इथेरियम को जब वो लेयर 1 में है। लेयर 1 में कंपटीशन हो सकता है। देन अगर जो आप कॉस्मोस को कंपेयर करते हैं तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा पोल्का डॉट को, बिकॉज पोल्का डॉट इज लेयर 0। तो पोल्का डॉट और इसको इथेरियम को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज पोल्का डॉट 0 है। अब पोल्का डॉट के ऊपर प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कंपेयर होंगे इथेरियम से, क्योंकि पोल्का डॉट के ऊपर लेयर 1 आएंगे, देन वो लेयर 1 से कंपेयर होंगे जो इथेरियम से कंपेयर हो सकते। हाँ, उसमें एक है कि इकोसिस्टम की बात आती है। इकोसिस्टम आपका अगर जो डिवाइड कर देते हो कि ये इथेरियम के ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट है, तो वैसे आप बोल सकते हो कि ये पोल्का डॉट के इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है। बट वो बेसिकली डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ, वो खाली इतना हो गया कि हाँ वो पार्टी में डिवाइड कर दिया है कि वो उनके इकोसिस्टम का पार्ट है। लेयर 0 से लेयर 1 आया, लेयर 1 पे कोई प्रोडक्ट आया होगा, मतलब डी ऐप वगैरह, देन वो डी ऐप को आप इथेरियम के डी ऐप से कंपेयर कर सकते हैं, देन वो कंपैरिजन हो गया। बट पोल्का डॉट को इथेरियम से वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ना कॉस्मोस को पोल्का डॉट को कर सकते हो बिकॉज दे आर लेयर 0। Karma heard about Moonbeam? हाँ, मूनबीम उसका ही तो है। He voted? तो Good. मूनबीम नहीं है, मूनबीम के साथ अल्टरनेट उनका प्रोजेक्ट भी है, कुसामा पे आ रहा है, पोल्का डॉट पे आ रहा है, Kusama पे, दोनों हाँ। हाँ। तो मूनबीम का जो एक अल्टरनेट प्रोजेक्ट है वो आ रहा है पोल्का डॉट पे, तो आई थिंक वो भी जीत गया है। हाँ, तो दोनों ही जीत गए पैराचेन ऑक्शन, Correct, कुसामा वाला भी, correct, पोल्का डॉट वाला correct. भी। By the way, अब दोनों compete करेंगे इथेरियम हाँ, से by the way, डायरेक्टली बोल are सकते। you one of those believers that Dot would be Ethereum killer, or what I डॉट believe विल बी is काइंड ऑफ it'll बिगर take देन, a market share, it'll take a big market share of the whole no, market. Like, as per market cap, it can possible in upcoming market days share Polka मतलब dot layer can 1 flip, layer 0 का market share अच्छा खासा Dot उठा लेगा, you know, वैसे ले के सकता। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। मैं उस नॉट लाइक कि वो बिल्कुल खत्म ही कर देगा इथेरियम को, बट ऑब्वियसली बिकॉज इथेरियम को खत्म करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ शार्डिंग, और जिस लेवल पे उसका डिफ्लेशनरी एसेट जिस तरीके से वो बन रहा है, इट्स बियॉन्ड कंपैरिजन विद एनी अदर एसेट, व्हिच आई थिंक And I would never even Polka want to dot hold BTC. Po- I'd as rather go for compared to Ethereum. Polka dot, yeah, as compared to if you compare Ethereum with Polka dot, and तो as a investment में you will find like right now Ethereum is a deflationary Yeah, because burning हो yeah. रहे हैं, and as per बोले 2.0 के बाद वो totally deflationary हो गंदा जाएगा। वाला बट on other hand पोल्का डॉट का फिक्स्ड नहीं है, लाइक पोल्का डॉट का तो आप जाके देखोगे तो आई थिंक उसका कैप ही नहीं है, एंड वहाँ पे कोई डिफ्लेशनरी का पार्टी, आई थिंक 10% इन्फ्लेशनरी आई थिंक वो, तो उस वे में तो अभी तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो नेगेटिव है। बट यहाँ पोल्का डॉट का ग्रोथ जिस हिसाब से वो प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब से टीम है, आई थिंक गैविन वुड, मैं उस हिसाब को मानता हूँ कि आप उसके ऊपर पैसा लगा सकते हो। अगर जो पोल्का डॉट आपको समझ में नहीं आ रहा, ये डाउट में हो कि यार ये क्या है, तो उस इंसान के ऊपर पैसा लगा सकते हो बिकॉज दैट गाय मेड इथेरियम। लाइक बोलते हैं कि यार वो था चार्ल्स हॉस्किन था ना, ये वितालिक था, बट फॉर मी लाइक गैविन वुड का जो रोल था इथेरियम के अंदर, आई थिंक वो सबसे बेस्ट रोल था, एंड आई थिंक सबसे सॉलिड पार्ट था। तो उस वजह से मैं पोल्का डॉट पे कभी भी बैट लगा सकता हूँ, आई थिंक वो कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है वो पूरा ही चेंज करें। कॉस्मोस भी है बट लोग बोलते Yeah, Cosmos also there, but you heard about Cadena? हाँ, KDA? यस, Like it's coming into my like काफी टाइम से मेरी like wish list में है कि इसके ऊपर रिसर्च करूँ, कुछ एग्जाम्स नहीं, we were doing, we had a discussion on KDA since it was I think around $2 $4, and six months ago when even it was not listed in KuCoin. Oh, So we amazing. had a multiple discussion later on as well. So yeah, it is kind of worthy because right now nowadays people are like projects are shifting on POS, but that project came with a POW that they are committing to be better than other, but still as we said we haven't seen their product yet. So until unless we are not seeing the product, we are not verifying whether whatever they are promising
are they really going to deliver that or not? Because as for Solana also committed something else. But when they started delivering their project, we found like there has been drastic change. I think almost 50% down on TPS as well. So until unless you don't verify the actual rates as compared to their white papers, you cannot say anything. But yeah, as for the white paper and as for the working on a team as well, you can bet it. It is a good project. करीना पे अभी एनएफटी प्रोजेक्ट्स आने वाले उसके बाद पंप आई थिंक मारेगा वो, ऐसा बाइनेंस मुझे पे लगता है। लिस्टिंग बाइनेंस पे लिस्टिंग हो गया उसका। हाँ, बाइनेंस पे तो हुई गया लिस्ट, और अभी एनएफटी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उस पे। एंड बेस्ट पार्ट इज कि मेरे वो को पीओडब्ल्यू पे 100,000 ट्रांजेक्शन टीपीएस प्रॉमिस कर रहा है, विच इज वेरी। और उस पे आप पीओडब्ल्यू पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड पीओडब्ल्यू इज मोर सिक्योर देन पीओएस। सो अगर वो सही में वॉट एवर इट, इफ दे डिलीवर इट, इट कैन बिकम ह्यूज। सोलाना वोलाना सबको पीछे छोड़ देगा वो। हाँ, सोलाना को तो खा KDA, जाएगा तुरंत ही, बिकॉज देन KDA, वी right? डोंट नीड सोलाना। यस, केडीए। I think I need to get a bag of. I'm thinking like I haven't added ADA and Quant in a bag in my portfolio, but I'm thinking of adding these. Any केडीए एंड views? हैथोर बोथ शुड बी ऑलवेज दे आर काइंड ऑफ जेम्ड एंड बोथ Hathor, वर्क तो ऑन yeah, पीओडब्ल्यू। I have Hathor, but like ज़्यादा नहीं, very less Hathor, like 50 USD or 100 USD worth के उठाए थे वैसे, I don't remember right now, but something like that. But I'm still thinking, yeah, Quant and KDA during the day. क्वांट मेरा भी लेने का मन है इसके, मैंने आई हाँ बॉट क्वांट एट यार, $400। Josh, I actually wanted to buy Quant when it was like worth like 25 के बीच में रेंज कर रहा था उस समय वो, and the thing was obviously insufficient funds उठा नहीं पाए, opportunity lost. It's okay, no आई problem. वाज आई I went एक्चुअली with वाज I went with I went with Solana then, and I got a good entry in Solana like around 15. So yeah, nice. I actually came to know about quant when it had already pumped. So what no, they're I doing is heard. very unique, and You've so heard of I kind VXV? of You've heard of VX? know. Check out VX. But It's there on Go. quant is unique project. Like there's no such project like Yeah, quant. it's yeah, quant is like क्या ही I have बोलूं, been quant में ऐसा ऐसा averaging ऐसा it. I feel like कि quant में तो अब थोड़ा डॉट के लेवल जितना इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा ऐसे लगता है quant का तो Quant I actually keep on averaging whenever it is down. But yeah, I'm planning to start buying quant at the level of 85. I have my zones marked up. okay. 85, And so then yeah. when this US and all these are now talking about CBDC, and there's only one Hmm. project which can do that. That's quant. Yeah, that's the thing. You know, But I think it will take like around 2020. UK said it will take 4 years. So in like 2020, when and they say, I think right now it's like I actually have a very good picture of comparing how crypto whole market is compared to the other markets and how it can actually take up all the markets. I feel even the whole bond market merged up to cryptos, like securities end of the day cryptos में तो जो पूरा market cap है bond का it will just merge up to crypto, and can you imagine the difference at this point? So like this is like a far-fetched thing, like 10 years, 15 years down the line, it is a possibility. Very, very, very. XRP क्या कर रहा है end of the day? XRP is still dealing with the case, but But it's still, still working in you other know ना countries. यार, Josh, end of the day they don't have anything. SEC के पास कुछ नहीं है. Last note deny किया. But I don't know how much price it Argument would पूरा deny pump. किया. The volume is high. XRP But volume is high, but and the whales are but you holding like see na, millions. like Josh, in XRP we have a thing that it's mainly regarding securities. उसका काम ये है कि securities कॉमन मैन को वो देनी है, क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी देनी है कॉमन मैन को सिक्योरिटीज से डायरेक्ट कनेक्ट करना है, वरना सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स पूरे किसके पास होता है, मेजर बड़े लोगों के पास होता है, कॉमन मैन के पास नहीं, बिकॉज इवन दो इट इज अ वेरी सेफर बट इट लेस क्या कहते हैं रिवॉर्डिंग, बट इट्स वेरी सेफ, राइट? तो कितनी XRP कंपेयर कर लो, ये 100 ट्रिलियन का मार्केट कैप है यार बॉन्ड्स का. Yeah, I agree. And I think more than market, like more than bonds and securities, का ये है inter border transfer payment. हाँ, तो इसका इंटरबॉर्डर बड़ा यूज ट्रांसफर केस है. पेमेंट उसका तो मतलब वो तो खा जाएगा वेस्टर्न यूनियन मनी. अरे मेरे को अभी दिक्कत आई थी. आई एक्चुअली गॉट माय फी. द exchanges were not giving me USD because of the war. They were like कि no, we are holding USD and euro. यहाँ की लोकल करेंसी जॉर्जियन लारी ले. मैं बोला पागल हो Oh, गया मैं. और एक्सचेंज रेट भी इतना, like because of things happening, exchange rate भी very bad. I'd had to go up to a bank and there too they had a limit I understand. कि नहीं इतना ट्रांसफर, like it's very crypto. You could have transferred USD to your account US or wherever you are and then converted it.
Okay, but you needed USD. You are not in Georgia. No, no, no. I'm in Georgia three, but वो भी Hmm. that is also no. I can also get that done. वो भी हो सकता है, but when family is involved, It's क्या बोले? exactly. Like No, I'll tell you one thing, me and my like not me. I'm actually a passive come active investor, but my brother he is very actively into ecosystem of everything tech. He's a cybersecurity consultant, like ethical hacking and all. उसका काम ही है. वो अंदर तक जानता है पूरी security system securities and all of this. So वो मेरे को basically पूरी he explains me all proof of work and everything in the layman's term. So I'm majorly like upside invest. Like I don't see actively. Now I think everyone should be active in this community. It's very important. Very important. yeah. I think people are I just not want to aware know yet. your, yeah, please go on, Josh. You were saying No, something. I was just saying that actually people are not aware about all these cybersecurity and technical fundas, right? My They don't God, understand. यार ये कुछ भी नहीं That's why, मालूम है. वो छोड़, Josh, money. exactly. People don't itself. Yeah. I wanted to ask about like a project, like what do you guys think about it? Hmm. So you guys have Which heard one? about basic attention token. तो like I want to know because अभी हम बात कर Yeah, रहे थे तो you said that कोई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा जाए which you probably use. तो I do use the Brave browser and I quite like it and अभी अपना सर्च इंजन भी ये बना रहे हैं and इनका वो पूरा क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करने का बेसिक अटेंशन टोकन में that idea also I think it's good. So what do you think about the project? I think the team is good. I think. The founder of Mozilla is the same, like the Brave founder is the same as the founder of Mozilla Firefox, I believe. Yep. Team is good. Their ambition is also good. They want, like, I also use Brave browser. They pay you in bad tokens for seeing the ads, so they kind of are paying you for using your time, your activities on internet rather than other browsers which are just stealing your data or your activities and using for themselves, so monetizing themselves. So the intentions are good, and they are kind of decentralizing their bat wallet. Their bat wallet, I think now you can add Ethereum as well to that and things like that, right? I have not used it since last 6 weeks because I was not active. But Yes, it's now recently been active. The Bat wallet has recently been active, so now you can do all the. yes, yes. So yeah, that is great. I think it is good. Project is good. I do not know how what will be the price movement and things like that, but project is good and we can see it working. It's on the ground. It's not like something in progress, right? So it's something which is already in production, or you are seeing it working, and then you are seeing it rewarding you. Like people like us can see that we get rewards when we use Brave browser. So yes, there is And a good people are conviction. switching, and I think people are also switching to the Brave browser. Like, they are getting more downloads. So there is that, you can actually see their sales, unlike a lot of other cryptos that कि ठीक है, Brave browser का usage बढ़ रहा है. Yeah, yeah, because nowadays people have started realizing that whatever browsing they do on internet, that is being tracked and being used for monetizing benefits by these browser companies like Google or Yahoo, whoever they are. So now people don't want to give them information for free. Some people don't want to give the information at all. Some people are okay information, but you have to pay me for that. So I'm from that category. So I'm okay. You take my information. Anyways, sometimes these information they take from us is helpful for us because they'll be recommending us our interest area stuff. But if you are paying me for that, then I'm happy. So that's why I also use Brave browser now. Make some tokens, but yeah, haven't made anything substantial. But yeah, the concept is good. I like it, and I think lot of similar happen now. There is this chat coming. It's like WhatsApp on decentralized network. It's on Solana. I forgot its name, so it has similar features, things like that. So let's see. This Brave, I think, will become the pioneer of because this is the first browser or like first company which has become so serious and started implementing. Yeah, I agree. Like Brave actually, and it has a good background of the founders, the founders' background also. So you know that you are hoping that it actually becomes an asset or it actually becomes something which is well utilized around the world, and it could be valuable. I don't know, even I don't know about the price. How much the price estimation is going to be, but I feel that ठीक है, like it's like $50 right now. तो आई फील कि ठीक है इसका अगर अडॉप्शन बढ़ता है पीपल स्टार्ट यूजिंग तो एटलीस्ट लाइक एटलीस्ट 20-30% रिटर्न तो यू कैन गेट फॉर श्योर. $50, $50 or 50 cents. $50 ₹50. Oh, in हाँ तो मतलब and it I think it's been over its all time has been over $100.
तो ऑलरेडी मतलब उतना तो हो ही चुका है। अच्छा, बाय द वे लिसन गाइस, मेरे को पैसिव होने के लिए आई एम थिंकिंग राइट नाउ अबाउट फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइक स्ट्रॉन्ग. हैव यू हर्ड ऑफ इट? आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग अप अ नोड ऑफ स्ट्रॉन्ग. I think I have heard it is. उसका भी वर्क चल रहा है साइड बाय साइड, बट द थिंग इज ऑब्वियसली आई loved the way strong is acting right now because I was waiting for it to come down and I'm still waiting for it to come down a bit more क्योंकि उसके नोट के लिए मेरे को एटलीस्ट 10 तो उठाने पड़ेंगे. That's a big investment also. So yeah, hopefully trigger हो जाए entry. All the best. Any idea? I have no idea. Anyone heard? I'm trying to get into HNT helium mining, and it has been 1 year since I've ordered my miner and I haven't received it यार, yet. if you want, I can get you a minor now itself. It's just that कि the thing is मैंने दुबई में ऑर्डर करके रखा हुआ है मेरे भाई के पास. Like ये मैंने बताया ना जो है Which brand? the cyber security consultant वाला. I don't know, उसने ऑर्डर करके रख दिया. I sent him USDT. He's like ठीक है मैंने ऑर्डर करके रख दिया. हम लोगों नहीं, को ऑर्डर तो कर दिया, That's all. वो डिलीवर हो गया. हाँ. नहीं, उसने डिलीवरी फिर कैंसिल करवा दी थी. तो वो चाहिए तो मैं अभी करवा सकता हूँ. मेरे पास एक कूपन और वो भी है. शायद कूपन नहीं, क्या कहते हैं, इनवाइट है एक उसका, उस भाई के पास शायद, मोस्टली भाई के दोस्त के पास. ब्रांड कौन सा है? बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी वगैरह इट शुड मैच राइट इन द कंट्री यू आर इन. आई कैन लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल. मैं वैसे भी 1 वीक में दुबई ट्रैवल भी कर रहा हूँ. ओके, पिंग मी बैक चैनल मी यू इफ यू वांट? थिंक. बट आई थिंक हाँ. आपका यूरोप का है, इज नॉट सपोर्टेड इन एंड वाइस वर्सा. आप हाँ भाई. सॉरी जोश, आई जस्ट फॉलो यू वंस अगेन. ओके. बट एचएनटी यार मेरे भाई ने इसलिए कैंसिल किया बिकॉज ही कैलकुलेटेड इसलिए कि करंटली वर्थ इट नहीं है. सो वी आर, इसलिए हम लोगों ने प्लान चेंज किया टू स्ट्रॉन्ग. इसलिए मैं कह रहा हूँ जोश, But yeah, I चेक am आउट also स्ट्रॉन्ग thinking वंस. same to cancel my order. वैसे भी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार, 1 साल लगता है. हाँ, बिकॉज हम्म. द थिंग इज कि काफी लोगों ने, एटलीस्ट दुबई में उसके आसपास काफी लोगों ने वो डाल रखे हैं. एंड करंटली इतना यूजेज नहीं है फॉर उसके लिए. तो हीजे की निकल इतना रिवॉर्डिंग अच्छा मिल नहीं रहा, बट मे बी बाद में अच्छा मिले. तो वी आर लाइक कि नहीं, करंटली तो इतना वो नहीं है कैश रिजर्व कि हम बाकियों में एचएनटी में डाले. तो इसलिए हमने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया. अराउंड 600 का था समथिंग, 550 से 600 का समथिंग था. आई रिमेम्बर उतना ही भेजा मैंने उसको. ठीक. But let's see. It's gold. But I'm telling you, Josh, check out VXV and this strong surely. अगर पैसिव के लिए तो सोच रहा है हाथवर में, तो स्ट्रॉन्ग देख ले. स्ट्रॉन्ग है, थॉर है, पावर है इन सब में, बट स्ट्रॉन्ग आई बिलीव इज, भले ही इट इज एट द एंड ऑफ द चार्ट, तो उसका बाउंस बैक बेटर भी हो सकता है. इसलिए Sure, I'll look into it. Nikhil. हम्म. Hey Benny, you wanted to If you say want, something? I'll explain you in a very short form. Okay? So, what strong does is like you need to put at least 10 strongs, okay, to make a node. Okay, one node generates you. Nikhil, we lost you. तो वो प्रॉपर अपना कर रहा है, तो उठा ही नहीं एवरी सारे रिटर्न्स. I think Nikhil, you don't like his network connection is not stable or something. Benny, do you want to say something? Yeah, hi guys, how are you? Hi Josh, Nikhil, Karan. Hello. Just have a question regarding the Indian-based metaverse. What do you think will be the number one? Like Decentraland, is there anything similar to that? Thank you. I think that I'm not following much of India's metaverses, but there is something called Meta Mall, which is an Indian metaverse project. Uh, and for sure, there'll be many. I'm not following, like nowadays, I'm not following metaverses much. I'm just following one project, which is called Metaverse Soul. Those guys are doing great job. Like, if you see, like you can yourself go inside that metaverse and you can kind of mint the land parcel inside the metaverse rather than going to a website and mint button. They have the racing coming and all. So, like in short, I'm not following any Indian metaverse projects. Vinny, do you have any, or you can share with us? None, I'm just curious. I follow CryptoVoxel a lot, so I'm just seeing if there is anything similar to that. I actually was on this one Sandbox. I tried Sandbox, and I played it for 2 3 days continuously. So I think Sandbox is probably could be a big metaverse universe in future. And a lot of artists are partnering with Sandbox. And even the interface of Sandbox, I've played Decentraland and I've played Sandbox. So I felt that, in terms of graphics, Decentraland is better.
But in terms of the whole metaverse experience and like communicating with other players and like activities, quests, I think those things are like better in Sandbox. So I think these two, I don't know about the Indian metaverse, but these two metaverses I think are probably right now the biggest. But I still think यार अभी खुद उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ढंग से अभी तक बने नहीं because building blocks of NFT वो metaverse कैसे properly develop करने it needs a bit Uh, more time. That market needs a uh, bit more time. अभी ना like It's a in bit risky to Sandbox. get into it, I feel. This is my personal अभी opinion. like yeah like in अभी तो it's all just speculation like metaverse का whole thing is a speculation but वो ये है कि I feel that इसमें अगर जैसे एक दो players रहने वाले हैं जो क्रिप्टो मार्केट से होंगे तो आई फील दैट अभी जैसे सैंडबॉक्स है तो सैंडबॉक्स का अपना वॉक्स एडिट है तो उस पे यू कैन एक्चुअली क्रिएट लैंड यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स यू कैन क्रिएट सम आर्ट पीसेस ठीक है आप डाउनलोड कर लो वॉक्स एडिट एंड उस पे आप खुद क्रिएट कर सकते हो मतलब मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ आप भी क्रिएट कर सकते हो एंड देन यू कैन डायरेक्टली पुट इट ऑन द मार्केट प्लेस आप उसको सीधा लिस्ट कर सकते हो या फिर यू कैन सेल इट टू समवन इन द गेम तो आई थिंक सैंडबॉक्स इज एक्चुअली ना मतलब दे आर गिविंग द पावर ऑफ मेकिंग द मेटावर्स टू द पीपल तो वो लोगों के हाथ में ही है कि अब वो कैसी चीजें बिल्ड कर रहे हैं वो उसको कैसे वो करते हैं हाउ डू दे स्ट्रक्चर इट एंड अभी तो फिलहाल लाइक फॉर एनएफटीज there is like for example there would be an art piece on the wall and if you like it so there would be like a if you click on it then it will send you to OpenSea तो हाँ वो उस तरीके से थोड़ा रीडायरेक्ट करता है तो वो चीज अभी बिल्ड नहीं हुई है बट आई थिंक दैट पब्लिक के हाथ में अभी सैंड बॉक्स का मुझे पता है कि वो तो पब्लिक को दे रहे हैं कि आप बनाओ मेटावर्स So Karan, basically, if you can't sell things on Sandbox directly, you have to have your parcel there. Although you can create using box edit, but बेचने के लिए ना आपका पार्सल होना चाहिए. लेकिन जो आप बता रहे हो ना तो जनवरी में these guys started their boot camp. Sandbox started their boot camp where they were allowing all the participants to first, they were teaching them how to use this box edit. They will train you, and then whatever you create, you could sell. So, like those participants who became part of that boot camp, they don't need to have a parcel on the sandbox to sell their things. So that was an advantage. Similar thing is in crypto boxes also, like when you mentioned it, they also have some similar software called Vox. It also is something Vox because the file format is actually dot whatever files you create on this platform. The file format is dot vox, and that is compatible to blockchain or maybe to the metaverse like Sandbox or this guy, crypto boxes. I think So even it's crypto called boxes does Magic that. of Vox or something. It's a third party. Yeah, magic boxes. Yeah, magic boxes. Right, magic boxes. Yeah, I actually came to know about magic boxes for box. I also tried to create some structures using magic voxels on the crypto voxels. Uh, but then later, when the time came, I realized I need to own a parcel before that. Without that, I cannot sell my items there. And then I came to know about Vox Edit and the Sandbox. This thing, what you say, bootcamp. Due to my like travel and all that stuff, I couldn't continue with that bootcamp. But I had plans to continue or like to create some or maybe learn some these Vox images because they were teaching April to buildings to swimming pools, grounds, everything how to create, and then you can sell them. Another project which I think is very good, Decentraland. I am on Decentraland and I kind of have been inside playing or maybe doing various activities. It also works very smooth and it is very nice. It has lot of features like you can chat with people, you can also talk with people there. So it gives you a very kind of a 3D environment where you feel like you're there physically. And I've also participated in some Samsung related events on Decentraland when Samsung launched their first virtual office on Decentraland Metaverse. And since then, I believe a lot of brands are coming on Decentraland. And this guy Snoop Dogg also owns. Where does he own? He owns in Sandbox or Decentraland. I think some Sandbox. big. I think Sandbox. I think Okay. Sandbox में होगा. Snoop Dogg is in Sandbox yeah Sandbox Yeah. है अटारी के साथ अटारी भी बहुत and भयंकर तरीके से है. Dead Mouse also on Sandbox And a few months ago, even Justin Bieber came on Metaverse. I don't know which one was that. So yeah, these guys are these हाँ मैं वही experiences are कह रहा हूँ becoming मैं popular. वही कह रहा हूँ ना these people are like hyping the thing but बाद में जब उसकी value we can as intelligent because there's gonna be a burst in that market. Yeah, it will be very difficult I feel to get into these it'll be projects. very
अभी नहीं जा यार सकते यार, $50,000 से लैंड ही नहीं मिल रहा है। भैंस की आंख वाट लगी हुई है यार, पता नहीं क्या कर रखा है उन लोगों So इसीलिए now kind of I'm trying to find out new projects which can be tomorrow's Decentraland, because Decentraland Sandbox ये like 2016-17 के projects है, right? ये तो अभी they came into limelight, or maybe we came to know about them. So it will take any project to reach their level some time. So these projects like Heavenland, Metaverse Soul, and there is another project which is very hyped, यार वो 20 सोल में मिल रहा है उसमें एक फ्लैट, आई फॉरगॉट द नेम, बट दीज आर ऑल ऑन सोलाना इकोसिस्टम। एंड देन इफ यू गो टू डिफरेंट ब्लॉकचेन्स लाइक नियर प्रोटोकॉल का खुद का एक नियर वर्स बन रहा है, लूना का खुद का लूना वर्स बना रहे हैं, एंड क्रोनोस चेन में क्रोनोस वर्स बन रहा है। सो एवरीबडी वांट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, नोबडी वांट्स टू स्टे बिहाइंड। So whatever project you think can be big in future, just $200, $200-250 में आ जाता है एक लैंड आज की तारीख में, if you can just Polygon invest. world भी Yeah, Vinny, we lost you. Your voice was what polygon? जो Vinny, your voice is cutting. I can't hear. ये Polygon world भी आ रहा है ना, any metaverse on Polygon? I think Decentraland is on Polygon. Decentraland खुद Polygon के ऊपर ही है, और Polygon के ऊपर तो Blocktopia भी है। Like Polygon के ऊपर बहुत सारे metaverse की Polygon में it's very fast and the fees is also low, right? So Blocktopia is on Polygon. Decentraland is on Polygon. Polygon is a project which can become huge. It can become Amazon, like today's Amazon. I really have great hopes with Polygon. Polygon का प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आई लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, आई कीप ऑन एडिंग Polygon टू माई पोर्टफोलियो, और उसका इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा लाइक डेफाई में 10% 20% तक भी देते कुछ एक्सचेंजेस। सो इफ दे आर गिविंग सो मच रिटर्न विच मीन्स देयर इज अ डिमांड फॉर इट एंड समथिंग इज बीइंग बिल्ड। पॉलीगॉन इज वेरी नाइस प्रोजेक्ट आई थिंक। और एक तो उसका एक और है, उस पॉलीगॉन के साथ ही बाइकोनॉमी BICO, इनफैक्ट ये दोनों इंडियन प्रोजेक्ट्स ही हैं, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाइक Web3 के पायनियर बन सकते हैं। Biconomy is Indian too? I Yeah, didn't know that. Biconomy is into Polygon is the biggest client of Biconomy. I think Polygon can 100x from here, right? I don't know that, but I know that if Web3 is true, if something has to be there on Web3, then these projects like Polygon or maybe Polkadot Pay card projects हैं, so those guys can pump. But Polygon has been Polygon's underlying chain is Ethereum, right? Like the most widespread one and most popular and most stable one. So Polygon से तो बहुत hopes है. Let's see how it does. The thing is with these projects, they are very new, right? So ये जो कॉइन्स होते हैं ना, दे डेवलपर कम्युनिटी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ कॉइन्स। सो जब भी प्राइस पंप होता है, उनको भी पैसा निकालना है ना उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो वो बेच देते हैं टू जस्ट मेक सम मनी सो दैट दे कैन रन द प्रोजेक्ट। तो फिर क्या होता है, वापस प्राइस नीचे आ जाता है। तो दैट्स व्हाई सोलाना जैसे प्रोजेक्ट तो कहाँ मतलब $2-3 से 100 पहुंच जाएंगे, क्योंकि सोलाना में दे डोंट टेक प्रॉफिट आउट, बिकॉज सोलाना के इन्वेस्टर सारे ही रिच, दे ऑल आर रिच पीपल। They don't need money or they don't need to take profit out of these coins, उनके अपने अलग sources है। But Polygon, Chainlink, or API3, all these projects are pioneer of Web3. When the problem why their price don't go very much is that their developers have a pressure to sell it. That's how they make their salary and also they run the project or maybe build the project further. API3 के बारे में पढ़ा है? API3 बहुत सही project। Josh, where are you from in India? I'm from Rajasthan. Right now you're in Rajasthan. Yeah, from Yeah, Rajasthan. good man. You have good knowledge. I appreciate all your knowledge. No problem. But I would suggest Yeah, everyone to API3 is kind of anyone who is into IT or software industry, they can realize the importance of APIs in today's world. Every information, our apps or our applications that read from other systems is through API. Like rather than directly interacting with the database of that system exposes some APIs, and you can just call those APIs and populate that information in your web application or in your mobile app, right? So that's in the centralized world. Similarly, in the decentralized world, there are so many blockchains which can be treated at different servers or different networks. And now, if you have to build an application where you need to get data from different chains or different networks, you should be like those chains should be enabled to expose themselves as an API. So API3 is that project which is enabling all the chains or all these products to kind of have their own API created and exposed to the outer world. Chainlink was doing it earlier, but in Chainlink, what was happening? Chainlink was kind of an additional adapter between your application and your source of application. So your source or you would have to install an adapter in between and then connect your apps and then take data, which was not that fast and easily maintainable. But API3 is covering all these. Basically, the development team of API3 came from Chainlink. So just read about API3. API3
If Web3 is true, is going to be true, then API 3, I don't know where it will go. So, Josh, are you also a Web3 developer? Do you develop in Solidity or anything? Yeah, I am not a developer by profession in Web3, but for my own learning, I have developed few, not Oh, few, but celebrity some apps. Web3 apps. Yeah, I developed one Oh, portal on awesome. Solana, which was a meme portal. You connect your wallet and you can see. I also developed few NFT. Like I learned how to develop NFTs using coding on Solana, and then how to use their candy machine. So Metaplex is the utility provided by Solana, which helps you to kind of upload your NFTs through their candy machine on the Solana ecosystem. So I developed that also. So yeah, only for my learning, I not professionally. And then I also joined some boot camp, Near Protocol. Near Protocol is another very nice project which can become very big. It is from Russia. So those guys are doing a lot of boot camp and they are hiring a lot of developers. So I joined their boot camp. So yeah, but I think Solidity is very easy. But Solana's language is Rust, which is based on C, C++, and I think Oh, it is Russia. tougher than that. So Solana is difficult, but Solidity is easy to learn. Like I think it is okay. it is like Java. Are you into IT? Into Yeah, IT? but whoever has Your voice is breaking, Vinny. I can't similar hear you. to, yeah, yeah, I have a master's in computer science as well. Yeah, yeah, I'm into healthcare and IT as well. Like I have master's in computer science. Okay, nice. Good to know. Okay, then I'll close this room now. Yeah, I'm very interested in this metaverse space. So let's collaborate in the future. Sure. You can back channel me. Okay, Vinny, you can back channel me whenever you're ready. Okay, okay. And I think I will close this room now. I think no one else is interested to talk anymore. People have left. It's late now. So let's meet on a later date. Ravi will or Karma is going to kind of schedule rooms and then we'll talk. Okay. Okay, nice meeting. Nice meeting you guys. Have a good night. Bye. You were listening to the CryptoHub India podcast. Do follow us wherever you are listening so that you get notified about the latest episodes as soon as they're out. We are active on Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, and Clubhouse. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. This is Nirmal Sarkar signing off. Thank you.